and hope you're getting my voice well. And welcome to the evening with this chapter called a redox reaction. Hope so. What we have seen in last lecture, you are able to recall. We not very well. This is the third lecture for this redox reaction. In first lecture, we have discussed the fundamental definitions related with the redox reactions. So number one reaction is what are the classical definitions of oxidation and reduction. Furthermore, we have seen that is nothing but what is modern definitions of oxidation reduction with respect to electron transfer. What is oxidizing agent, what is reducing agent, and what is oxidation number. In second lecture, we have seen rules to assign the oxidation number, how oxidation number is assigned, and how to calculate the oxidation number for the given compounds or for a particular element in a given compound. That is what we have seen here in last lecture. Even in last lecture, we have discussed balancing of redox reaction by using oxidation number method. So balancing of redox reaction by using oxidation number method, and we have seen the steps involved in that. Today, actually, we have to discuss one or two more examples related with balancing of redox reaction by using oxidation number method. Before proceeding to that, we need to recall number one, rules to assign the oxidation number, and number two, the steps involved in the balancing of redox reactions. So, hope everyone amongst you is ready with the rules to assign the oxidation number. I will just have the recap for that, and then furthermore we'll go ahead. Or there are many examples what we have seen whose oxidation number we have calculated by the method. Okay. Now, what are the rules to assign the oxidation number? Rule number one is that the oxidation number of hydrogen is always +1, except metal hydrides where it is -1. The oxidation number of oxygen is always -2, except oxygen fluoride where it is +1. The oxidation number of metals is always positive. For first group element, it is +1. For second group element, it is +2. That depends upon the number of electrons present in the outermost orbit. Valence electrons, again, we can call. Rule number 4, oxidation number of non-metals is always negative. Rule number 5, the oxidation number of halogens is always -1. The oxidation number of halogens is always -1. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, these are the elements whose oxidation number is always -1, except interhalogen compounds where it may be a positive. The upper element in periodic table has the negative oxidation number, and the lower element in the periodic table have the positive oxidation number. That is what we have seen in last lecture too again. The second last rule and last rule we have seen that the oxidation number of the sum total of oxidation number of each and every element in a compound, in a molecule, is equal to 0. Or last rule, in case of charged compound, the sum total of oxidation number of each and every element must be equal to the charge present on the molecule. These are the rules what we have seen here for the rules to assign the oxidation number. So hope everyone is clear with this one. Bit going ahead, one rule has to be added over there because now we are going to balance the reactions. Oxidation number of pure element in its pure state, or oxidation number of element in its pure state must be equal to 0. Oxidation number of element in its pure state must be equal to 0. So जैसे कि नाइट्रोजन, आयरन, ऑक्सीजन कोई भी प्योर स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है. This one more rule has to be added because today we are going to discuss the rules to assign the oxidation number. Yeah. So hope so everyone is clear till this point. Then in last lecture we have seen that there are some certain steps to balance a chemical equation. How to balance the chemical equation? There are certain steps. So balancing of redox reaction by using oxidation number method, where we have seen rule number 1, that is oxidation number method के आधार मतलब method के आधार पर oxidation number के आधार पर हमें balancing of reaction करना है. तो step number 1 is that write a skeletal equation of the reaction. Write the skeletal equation of the reaction, number 1. Number 2, step number 2, find out the oxidation number of each and every element involved in a chemical reaction. Find out the oxidation number of each and every element involved in a chemical reaction. Rule number 3, find out the atoms, ions or species undergoing a change in oxidation number. Just find out which are the atoms whose oxidation number has undergone a change. Either it is increased or it is decreased. Rule number 5, find out the total decrease or a total increase in oxidation number per atom
Find out total decrease or increase in oxidation number per atom. Rule number next, either invert the number या फिर find out a suitable integer and multiply the equation with that suitable in order to balance all other atoms other than hydrogen and oxygen. Balance all other atoms other than hydrogen and oxygen with this integer or inverting the numbers. Next rule, in order to balance hydrogen and oxygen, we can add H plus, OH minus or H2O on either side of the reaction, depending upon either that reaction is acidic or either that reaction occurs in a basic medium. If reaction occurs in acidic medium, we can add H plus or H2O. If reaction occurs in basic medium, we can add OH minus ion or H2O. So that is what we can say, and that is these are the rules and by which we balance the reactions. Hope so. These rules yesterday मैंने यहाँ पे लिखे थे बोर्ड के ऊपर और आपने थोड़े से पढ़े होंगे. Is there any doubt to anyone? Otherwise directly we'll go to the example with which it will be more clear. This concept will become more clear to everyone with the examples. So is there any doubt to anyone regarding the rule? Yes, please. Okay, no response. That means there isn't any difficult doubt to you. I will go directly for the balancing of redox reaction by using oxidation number method. बोर्ड ज्यादा लगेगा उसके लिए. So क्वेश्चन ऐसा है. क्वेश्चन अब देखिएगा. क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? नहीं. So here is the question. Okay, हाँ अब दिखाई दे रहा है. क्वेश्चन ऐसा देखिए, रिएक्शन देखिए, MnO4 minus aqueous plus Fe2 plus aqueous gives you Mn2 plus aqueous plus Fe3 plus aqueous. You can say Fe3 plus aqueous, and this reaction occurs in acidic medium. So this is the example. अब देखिएगा, this is the reaction. इसके अंदर ये सीधा है कि हम बोल सकते हैं this is the example from your textbook too. जिसके पास textbook है अभी वो देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं. There is a reaction occurs between potassium permanganate KMnO4 with ferrous sulfate. This is the reaction between potassium permanganate and ferrous sulfate in acidic medium, and we have to balance this reaction. Okay, तो अभी यहाँ पे जो reaction लिखा है already unbalanced है. आप समझ सकते हो. This is MnO4. So MnO4. This is Fe2 plus. This is Mn2 plus, and this is Fe3 plus. Right side में जो लिखा है मैंने वो aqueous मतलब water solution. So सारे substances के water solution हमने यहाँ पे use किया है. So this is MnO4 minus. Unbalanced chemical equation मतलब क्या होता है कि एरो के इस तरफ जो हमारे रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड, एरो के इस तरफ हमारे प्रोडक्ट है. The number of atoms on left hand side must be equal to number of atoms on the right hand side. तो अब देखिए यहाँ पे मैग्नीज का एक ही एटम दिखता है, ऑक्सीजन के 4 एटम दिखते हैं, आयरन का एक ही एटम दिखता है. इस तरफ देखेंगे तो मैग्नीज का एक एटम दिखता है, तो मैग्नीज का इधर भी एक है इधर भी एक है, तो बैलेंस्ड. आयरन का यहाँ पर एक है यहाँ पर एक है, बैलेंस्ड. ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम दिखते हैं, राइट साइड में ऑक्सीजन का एक भी एटम नहीं दिखता है. दैट मींस वो नहीं लिखा है प्रोडक्ट के अंदर. So that means this is the unbalanced reaction. Number of atoms on the left hand side must be equal to number of atoms on the right hand side. So here it is not like that. Oxygen is present on the left hand side, but it is not written on the right hand side. That means this is an unbalanced chemical equation. Or we have to balance this chemical equation because it is given to balance, given to solution based on the oxidation number. So we have to follow the steps. Again, I appeal you, everyone. Answer may be right or wrong. That doesn't matter here. Finally, whatever the answer we are writing, we'll get half mark for the answer, final answer. The thing is that we have to follow the steps. So one by one steps और इस numerical के अंदर जिनको ये chapter exam में होगा, इनको इस type का एक numerical आएगा. मतलब इस type का एक reaction दिया जाएगा और जो आपको balance करने के लिए बोला जाएगा. तो यहाँ पे हर steps को आधा marks मिलते जाता है. 3 marks के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Balancing of redox reaction. हर स्टेप्स को आपको आधा मार्क्स, मतलब ऑलमोस्ट 6 to 7 स्टेजेस आते हैं, स्टेप्स आते हैं.
हर स्टेप्स को आधा मार्क्स मिलते जाएगा। तो कल हमने रूल्स देखे थे, किसी को याद आ रहा है? कल हमने रूल देखा था। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1, इज देयर एनीवन हु विल टेल मी द स्टेप नंबर 1 क्या है? कल हमने देखा था। सो एनीवन प्लीज, स्टेप नंबर 1, is there anyone who is able to recall what we have seen in last lecture? Yes please. Yes please. So first step was write the unbalanced equation. Very good, very good. So first rule was, or first step was that write unbalanced equation as it is. देखिए जो है, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखने के लिए आपको आधा मार्क्स वैसे के वैसे मिल जाएगा। So just I will rewrite the equation. ये एसिडिक में हटा देता हूँ बिकॉज मुझे स्पेस चाहिए था। यहाँ पे ब्रैकेट में ए करता हूँ, ए फॉर एसिडिक, मतलब दिस रिएक्शन occurs in acidic medium. ओके, तो रिएक्शन देखिएगा, MnO4 minus aqueous plus Fe2 plus aqueous gives you here Mn2 plus aqueous plus Fe2 plus aqueous. So this is the first step. जो भी इक्वेशन दिया है वो वैसे के वैसे हमने लिखा, दैट इज यू कैन से इन द सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 इज राइटिंग द अनबैलेंस्ड इक्वेशन एज इट इज। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, जस्ट आई हैव फॉलोड, आधा मार्क्स इधर मिल जाता। इज देयर एनीवन हु विल टेल मी द सेकंड स्टेप? व्हाट इज द सेकंड स्टेप? यस प्लीज, एनीवन? सेकंड स्टेप। Sir, may I? Yes please. We have to calculate and write the oxidation number of the element. Very good. We have to calculate and write the oxidation number of each and every element. Below that element and above that element doesn't matter. अब देखिएगा, इसके लिए आपको अगर स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं तो इक्वेशन वापस लिखना जरूरी होता है। इक्वेशन तो मैं वापस एक बार इक्वेशन लिख रहा हूँ, MnO4 minus aqueous plus Fe2 plus aqueous gives you Mn2 plus aqueous plus Fe2 plus aqueous. ओके, इक्वेशन लिखा मैंने, लेकिन हमें इक्वेशन नहीं लिखना है, हमें एक्चुअली हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अभी देखिए MnO4 के अंदर हम अगर अपने रूल्स अप्लाई करते हैं, रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है। तो यहाँ पे इसका Mn का निकालना है, तो Mn का कैसे निकालेंगे हम? x into 1 प्लस ऑक्सीजन का क्या आएगा? -2 into 4 must be equal to -1, must be equal to -1 क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज -1 है। ये कहीं तो रफली निकालना है, एक्चुअली अभी ये ओरली करना है, मैंने आपके लिए लिखा, ओरली भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी देखिए x प्लस, यहाँ पे x प्लस प्लस का माइनस बन जाएगा 8 इज इक्वल टू -1, 8 इस तरफ जाएगा तो +7 बनेगा, तो x इज इक्वल टू -1 + 7, दैट मींस x इज इक्वल टू +6 इज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो Mn है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 आता है, मैंने एरो करके इस तरीके से यहाँ पे लिखा, समझ रहे हैं आप लोग? सो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड फॉर दिस। We are with this now. Sir? Yes? So the oxidation number will be +7. +7? How? Oh, okay. हाँ. 4 to the 8. Yes. 4 to the 8. So because 4 to the 8, 8 minus 1, this is +7. Yes. Thank you. So +7 is the oxidation number. Oxygen को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, this is -2. तो MnO4 के अंदर दोनों एलिमेंट का हमने लिखा, आयन के अंदर आते हैं। अभी आयन है ना, न्यूट्रल एलिमेंट्स है ना ही कंपाउंड है, Fe2 प्लस है, तो इटसेल्फ इज अ आयन। अब इस आयन के ऊपर जो चार्ज दिया है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो चार्ज इज गिवन +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 होता है। किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज आता है वो चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहाँ पे इकलौता Fe+ दिया है, अगर मतलब Fe होता था, ओनली Fe, तो दैट इज अ प्योर एलिमेंट। ये Fe2+ है, तो Fe2+ होने के कारण जो +2 है इटसेल्फ इट्स अ ऑक्सीडेशन नंबर, तो +2 इज ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे भी देखिए Mn ऑलरेडी +2 दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया है, दैट इज +3 है, सॉरी ये ऊपर देखिएगा +3 है, सो दिस इज +3 ऑक्सीडेशन नंबर। सो दिस इज द सेकंड स्टेप इज डन। अभी ये एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको कि हमने कल के लेक्चर में काफी सारे हमने टॉपिक डिस्कस किए थे जहां पे ऐसे एलिमेंट देखे थे उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। अब ऐसे काफी सारे एलिमेंट आएंगे जिनका ओरली करके वहां पे कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने बताया कि 4 to the -8 इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस होगा और -1 जाएगा तो +7 बनेगा। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर।
Done. Step number second done. Now we have to proceed for the step number third. Step number third, anyone? Step number third, anyone? Step number third में we have to find out the atom or species whose oxidation number has undergone a change. किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है, वो एटम्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं, वो एलिमेंट हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो आप देखिएगा लेफ्ट साइड में यहाँ पे Mn है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, और इस तरफ देखते हैं तो +2 है। Mn दूसरे कहीं भी नहीं है, Mn इधर मिलता है, यहाँ पे मिलता है। इस तरफ +7 है, एक ही एटम है, और इस तरफ +2 एक ही एटम है, तो ये चेंज हुआ। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हुआ। देखिए ये चेंज हुआ, अभी +7 का +2 हुआ। ओके, +7 का +2 हुआ, ये डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? दैट इज डिक्रीज। तो +7 का +2 मतलब इट इज डिक्रीज। डिक्रीज। ऑक्सीजन का यहाँ पर -2, उधर ऑक्सीजन है ही नहीं है। आयन का यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, सो दिस इज +2 और यहाँ पे +3, इट इज इंक्रीज। increased, so this is decrease, it is increased। अब देखिए जनरली कोई भी दो एलिमेंट आपको मिलेंगे, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता आपको दिखाई देगा। या फिर कभी कभी ऐसा होता है एक ही एलिमेंट होता है उसी का इंक्रीज होता है, उसी का डिक्रीज होता है, ऐसे भी कुछ एग्जांपल मिलेंगे। बट जनरली ऐसे एग्जांपल मिलेंगे जिसमें एक एलिमेंट होगा जिसका डिक्रीज होगा, तो दूसरे एलिमेंट का इंक्रीज ही होना चाहिए। बिकॉज स्टार्टिंग में हमने देखा वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज किस कारण से होता है? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? सो अभी देखिए ये +7 का +2 बना, मतलब ये डिक्रीज हुआ। इसका मतलब दिस इज द एलिमेंट व्हिच हैज एक्सेप्टेड द इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्टेड द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट होने के बाद प्लस चार्ज -2 में चला गया, मतलब डिक्रीज होता है। और ये जो एलिमेंट है +2 का +3 हुआ, मतलब इसने पहले 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, अभी 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े, इसलिए +3। सो दिस इज द एलिमेंट आयन इज गोइंग फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फॉर द ऑक्सीडेशन। And this is the element which accepts the electron to increase the oxidation number, to decrease the oxidation number. So इसका जो हुआ है रिडक्शन हुआ है, तो Mn का रिडक्शन हुआ है और आयन का ऑक्सीडेशन हुआ था। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि आयन हैज गॉन फॉर ऑक्सीडेशन and this is gone for reduction. This is gone for reduction. So manganese has gone for reduction and iron has gone for oxidation. So that is the rule number 3 or 4 has been done. Okay, then step number next. IV. Okay, step number 6, 4. अभी होता क्या देखिए, हमें फाइंड आउट करना है टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। ओके, तो वी कैन से डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ON पर एटम, पर एटम। अब देखिए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? Mn का। Mn का यहाँ पे एक ही एटम था, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ पे एक ही एटम है, उसका +2 है। सो इधर भी एटम एक है, उधर भी एटम एक है, मतलब पर एटम है, और कितने से 5 से। सो दिस इज डिक्रीज बाय 5 एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर व्हिच इज ऑफ आयन। तो यहाँ पे +2 का +3 हुआ, सो पर एटम इज 1, पर एटम इज 1। तो अभी इसका मतलब ये होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, मतलब इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, आयन हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, whereas this manganese has got 5 electrons because उसका +7 का +2 हुआ, मतलब 5 electrons it has got। ये कैसे हो सकता है? Iron is losing only 1 electron and manganese is gaining 7 electron. It is simply impossible, difficult। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो आयन should lose a 5 electrons। So 5 is the number जिससे ये एक्चुअली 5 नंबर किसका है? डिक्रीज का है, इससे हमें आयन को मल्टीप्लाई करना है। और ये 1 नंबर किसका है? आयन, उससे हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। इसलिए मैंने रूल में लिख के दिया था इन्वर्ट द नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन का रिडक्शन को, रिडक्शन का ऑक्सीडेशन को, ऐसा नंबर इन्वर्ट करने, या तो कभी कभी स्पेसिफिक इंटीजर, मतलब एक इंटीजर हमें ढूंढना है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लॉजिकली आधार पर देख सकते हैं आयरन इज लूजिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन and manganese is getting 7 electrons, so that's why iron should lose a 5 electrons। तो इसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आयन का एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 5 atoms 5 ions 5 electron lose करेंगे, so that's why it has to be multiplied by 5। that is step number 5th। step number 5th is that equation में वैसे लिखता हूं वापस MnO4 minus aqueous plus Fe
2 प्लस सॉरी Fe2 प्लस को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 Fe2 प्लस एक्वियस गिव्स यू, अभी ये जो मल्टीप्लाई किया हमने सिर्फ लेफ्ट साइड पे किया, राइट साइड में कुछ नहीं करना है, राइट साइड में वैसे वैसे रखना है Mn2 प्लस एक्वियस प्लस Fe3 प्लस एक्वियस लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल आता है, नेक्स्ट स्टेप्स आता है बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी देखिए इसी स्टेप में देखते हैं कि मैग्नीज यहाँ पे 1 है, मैग्नीज यहाँ पे 1 है, इट इज गॉट बैलेंस्ड। आयरन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 ही है, इट इज नॉट बैलेंस्ड, सो इट हैज टू मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। दिस इज बैलेंसिंग विद इंस्पेक्शन, दिस इज बैलेंसिंग विद इंस्पेक्शन। एक बार हमने मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद इंस्पेक्शन से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। अभी देखिए मैग्नीज बैलेंस, आयरन भी बैलेंस हुआ, अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ। ऑक्सीजन देखेंगे तो इस तरफ ऑक्सीजन दिखता है, दैट इज 4 ऑक्सीजन है, और दूसरा कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है। अभी दिस रिएक्शन आपस इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में हम दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक तो H+ यूज कर सकते हैं और वाटर यूज कर सकते हैं। तो अभी अगर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो उसका वाटर मॉलिक्यूल उस तरफ निकलेगा, तो इस तरफ मुझे 4H2O करना पड़ेगा, तो उस तरफ हम लोग 4H2O करते हैं। देखिएगा स्टेप नंबर 6, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हियर इट विल बी MnO4 minus aqueous plus 5 Fe2 plus aqueous gives you Mn2 plus aqueous plus 5 Fe3 plus aqueous plus 4H2O plus 4H2O 4H2O क्यों? यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम, अभी अगर 4H2O लिखा तो 4 ऑक्सीजन हो गए, सो मतलब ऑल ऑक्सीजन आर बैलेंस्ड। बट अभी एक प्रॉब्लम हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है 4H2, जबकि हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कहीं नहीं है, राइट साइड में हाइड्रोजन ऐड हुआ, लेफ्ट साइड में कहीं नहीं है। ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में हम लोग H2 ऐड कर सकते हैं और H+ ऐड कर सकते हैं, तो अभी H+ ऐड लेना पड़ेगा। तो H+ कहाँ पे लेगा, जहां पे यहाँ पे 4 2 8, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 8 हाइड्रोजन दिखते हैं, तो इस तरफ 8 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, तो 8H+ ऐड करना पड़ेगा। सो स्टेप नंबर नेक्स्ट 7, we can say MnO4 minus aqueous plus 5 Fe2 plus aqueous plus 8H plus 8H plus, this is the addition what we need to do it, 8H plus, क्यों? उस तरफ 8 हाइड्रोजन है, gives you Mn2 plus aqueous plus 5 Fe3 plus aqueous plus 4H2O। अब देखिए everything is balanced, this is the balanced chemical equation now, or we have done nothing, just we have followed step 1, steps 2, step 3, steps 4। अब देखिए manganese 1 balanced, oxygen 4 oxygen balanced, 5 iron atoms balanced, 8H plus मतलब 8 hydrogen, 4 to the 8 hydrogens balanced, all charges are balanced, all atoms are balanced. This is the balancing of redox reaction by using oxidation number methods. Everyone please carefully go through it, have a screenshot or write it down.
Yes, any doubt to anyone? Once आइए देखिएगा कि हमने क्या क्या किया इस न्यूमेरिकल के अंदर. जैसे हमने सिर्फ स्टेप्स ही फॉलो किए. नंबर 1 स्टेप, राइट द स्केलेटल इक्वेशन एज इट इज. जैसा इक्वेशन दिया है वैसा लिख लीजिएगा. नंबर 2, calculate the oxidation number of each and every element involved in a chemical reaction. Number 3, find out the species or atoms whose oxidation number has undergone a change. What is increased or that is decreased? So which species has undergone oxidation, which species has undergone a reduction? Step number next, find out a total decrease or increase in oxidation number per atom. Total decrease or increase in oxidation number per atom, that is what we have written here. Step number next, that is you can say we have to invert the number या फिर multiply it by a suitable integer. Step number next, that is you can say balance all other atoms except hydrogen and oxygen with inspection. Next, balance hydrogen and oxygen by adding H plus, OH minus or H2O on either side, depending upon either it is acidic medium, depending upon either it is basic medium. Clear with this? Hope everyone got it. And let's put one more example related with this one. One more example. अभी देखिए ये जो एग्जांपल मैंने सॉल्व किया था वो आपके बुक के अंदर सॉल्व है. नेक्स्ट और भी एग्जांपल सॉल्व है. अभी मैं थोड़ा सा अनसॉल्व एग्जांपल देना चाहूंगा. सो देयर शुड बी अनसॉल्व एग्जांपल जो आपके बुक में पेज नंबर 92 पे अनसॉल्व इक्वेशन दिया और एक सॉल्व इक्वेशन आपके बुक में है, बट आई वुड लाइक टू गो विद द अनसॉल्व इक्वेशंस. तो आपकी बुक के अंदर और एक अनसॉल्व इक्वेशन है सारे पेज नंबर 92 पे. बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो उसके अंदर का एक इक्वेशन मैं सॉल्व करना चाहूंगा. तो पहला इक्वेशन Cr2O2 2 minus Cr2O2 2 minus aqueous plus SO4 2 minus SO3 SO3 2 minus aqueous gives you दिखाई दे रहा है. ओके, Cr2O2 minus plus SO3 2 minus aqueous gives you Cr3 plus aqueous plus SO4 2 minus reaction occurs in acidic medium. SO4 2 minus aqueous A. Okay, this is the reaction. इस reaction को balance करना है. वापस एक बार steps follow करते हैं हम लोग. So this is the question and we'll proceed for the step number 1. Step number 1, write down equation Cr2O2 2 minus aqueous plus SO3 2 minus aqueous gives you Cr3 plus aqueous plus SO4 2 minus aqueous. Okay, so this is the equation. ये हमने लिखा. Step number 2 है हमारा. अभी मैं इसी के अंदर करता हूँ. हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो इसी के अंदर कैलकुलेट करता हूँ मैं. This oxygen has -2. Okay, तो 2 to the 4 -4 इसका जाएगा +4. इसका आएगा +2. +2 भी नहीं आएगा, +1 आएगा बिकॉज दो एटम होने के कारण वो +1 आएगा. 2 to the 4
-4 +4 +2 और ये +1 आएगा, ठीक है। हियर ऑक्सीजन का -2, सल्फर का 3 2 6 माइनस इज +6 +4 is a +4 here +3 oxygen -2 sulfur +6 +6. So these are the oxidation number what we have calculated. Then step number 3, find the species undergoing a change in oxidation number. Chromium का इधर देखिए +1 +3 it is increased अभी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ओके मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सल्फर का यहाँ पे देखिए आप, सल्फर का डिक्रीज मतलब इट इज रिडक्शन। नहीं वो भी इंक्रीज हुआ, सॉरी that is also increased. +4 का +6 it is also increased. +1 का +3 it is also increased. Here is the printing mistake in the numerical. We'll have to make it here SO4 2 minus and here SO3 minus. Then it will give answer. It's a printing mistake, sure. ये प्लस होगा तो it will be +6 and here will be +4. Sure, it is a printing mistake. So conceptually, this species is going for the oxidation. This species must go for the reduction. +6 का +4 is the reduction. So that's why it's a printing mistake. हमें convert करके लेना है. So accordingly, so we got this one. Okay. Now, step number 4. Step number 4 is total decrease or increase in oxidation number. Chromium का. पहला डिक्रीज लेते हैं, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। ओके, अब देखिए डिक्रीज किसका हुआ है, सल्फर का। तो यहाँ पे एक एटम है, उधर भी एक एटम है, तो डिक्रीज पर एटम इज बाय 2 एंड हियर यू कैन से इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इज इक्वल टू, सो हियर वी हैव रिटन द ऑक्सीडेशन नंबर 1. It is +3, so it is by 2. So यहाँ पे 2 एटम है, एक एटम के लिए 2 से डिक्रीज हुआ, तो 2 एटम के लिए यहाँ से 4 से डिक्रीज होगा। ओके, 2 एटम के लिए 4 से डिक्रीज होगा, बिकॉज नंबर ऑफ एटम CR2 है, यहाँ पे CR है। So decrease मतलब here is the reduction process, मतलब it has gained 2 electrons and it has lost 4 electrons. 2 एटम ने इलेक्ट्रॉन्स 4 लॉस किए। सो ये जो डिक्रीज है, सो इंक्रीज इन एटम मतलब दिस हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट हैज गेन ओनली इट हैज लॉस्ट 4 इलेक्ट्रॉन, इट हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज़ इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम 4. सो इन दैट सेंस यू कैन से स्टेप नंबर 5 हियर CR2O2 2 minus aqueous plus here it must be multiplied by 2 SO4 2 minus aqueous gives you CR3 plus aqueous plus SO3 2 minus aqueous. Okay, अभी बैलेंसिंग देखिए, यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस रेस्ट ऑफ एटम। क्रोमियम यहाँ पे 2 दिखते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं हम लोग राइट साइड में। सल्फर यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पर भी हमें सल्फर को 2 करना पड़ेगा twice. So sulfur got balanced. Sulfur got balanced. Chromium got balanced. We have to balance the rest of the atoms. Step number. Rest of atom कैसे balance करना है हम जानते हैं अच्छी तरह। ऑक्सीजन देखिए 2 और यहाँ पे 4 2 8, ये 2 और ये 8 10 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 2 6 और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, तो 4 ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, इस तरफ 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो इट विल बी CR2 2 minus aqueous plus twice SO4 2 minus aqueous gives you twice CR3 plus aqueous plus twice SO3 2 minus aqueous plus 4H2O 4H2. रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, यहाँ पे
4 to 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन इस तरफ ऐड करना है. स्टेप नंबर 6 7 Cr2O 2 minus aqueous plus twice SO4 2 minus aqueous plus 8H plus aqueous gives you twice Cr3 plus aqueous plus twice SO3 2 minus aqueous plus 4H2O. This is the balance reaction. Hope so everyone got it how the reaction is balanced. इस रिएक्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक था, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा मूव ऑन करना पड़ा. समझ सकते हैं आप लोग? अगर दोनों जगह यहाँ पे अगर ये SO3 लिखते थे हम लोग, तो इसका भी इंक्रीज हो रहा है, इसका भी, दोनों जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है? सिंपली डिफिकल्ट है. सो वेयर देयर इज अ रिडक्शन देयर इज अ ऑक्सीडेशन, एंड दैट्स व्हाई we have made here SO4 and here SO3. This is the printing mistake in the book, sure. And देखो उल्टा करने के बाद हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया. So this is the balancing of reaction. We have to follow the steps. Clear with this? Have a screenshot, and that's all for today. See you tomorrow. Thank you very much.